which is the most needed thing in today's scenario or the corporate or organization you're working with. It all depends upon what kind of relations do you build within an organization, or even when it comes in terms of your personal life, what kind of thought process, and there is a lot of things which needs to be taken care of when it comes in terms of building up a relationship. आप लोग बहुत देखते होंगे कि फेसबुक में, लिंक्डइन में, सोशल मीडिया में ट्वीट्स बहुत आते हैं कि रिश्ते किस तरह से होने चाहिए, यू नो हाउ डू यू मेंटेन देम, उसकी ज़रूरतें क्या हैं? So now keeping this in mind, let's understand and let's also share your insights, my insights, that how does it actually helps, for the matter of fact, anyone, you know? Because when it comes in terms on the grounds of humanitarian, a person will be accountable, or he or she will be measured based upon a lot of things which needs to be taken into consideration. Okay? So now, before I start, I would request you people to please share your thought process. Also, share your insights. So that what will happen is we all can have a collaborative approach and understanding towards the essence and the approach towards building a good relationship, which will in turn benefit us as well as to the other person who is dealing with us. Okay? That, so now going to the first slide, let's understand why the relationships are important. The first aspect towards today's program will be to have an understanding that why is it that the relationship is important, right? Second is understand what our relationship is, you know, maybe in terms of your personal life or in terms of your professional life, what does it means, you know? And third one, understand how to build relationships, overcome barriers of relationship building, and maintain a strong relationship. All right. So these would be the session objectives. So going with the first slide, that relationship with friends, co-workers, your boyfriend, girlfriend, husband, wife, and family are important components of our life. जैसे कि मैंने पहले ही बोला दोस्तों, दैट मानवीय जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो रिश्तों को निभाने में है। जितने भी मानव जाति इस सृष्टि में हम लोग पैदा हुए हैं, हमारे कुछ मौलिक आधार है जिसके बेसिस पे हम ये रिश्तों को बनाते हैं और इस रिश्तों को निभाते हैं। एंड मानो या ना मानो फ्रेंड्स, इट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट दैट any person for the matter of fact, you know, that you require relationship to nurture yourself, to grow, to be emotionally strong, and to be connected, right? Whenever you come across a person who is lonely, that means that he or she is missing with relationship. So there are many aspects of it, being a father, being a son, being a husband, being a boyfriend, being a professional employee. So all these sort of things are really very much important to human life, which will in turn make him better. And the other side of the story is, agar rishte अच्छे नहीं हैं, then what it leads to is it makes a person to get bitter. Right? So there are two aspects to it. One, would you get bitter on it? So bitter is where when you experience a lot of negative, where when you get into a state where you feel mentally depressed. You can see a lot of people getting addicted to drugs or getting addicted to mental depression. ये इसलिए होता है that somewhere or the other उस बंदे ने इतने ठोकरे खाए हैं जहाँ पर उसको ये लगता है कि मालिक यार अब बस यार, है जी? जब जब वो किसी गलत रास्ते में जाने के लिए फैसला कर लेता है, बिकॉज़ वो एडिक्टेड हो जाता है किसी भी नेगेटिव चीज़ को। So that's how it is required that you mentally groom yourself, right? Which will help you. ठीक है? Why are relationships important? Let's understand why. Okay. So now humans need to feel and accept from social groups, family, peer. In fact, the need to belong is so innately ingrained that it may be so strong enough to overcome physiological and safety needs such as children's attachment to abusive parents or staying in abusive relationships. Now, friends, but when you look at ह्यूमन नीड के ऊपर बात करते हैं, तो आप ह्यूमन नीड में बेसिक चीजें देखना, इंसान को
सबसे पहला क्या चाहिए होता है? व्हेन वी लुक एट द मैस्लोस हायरार्की, वो क्या कहता है कि इंसान को सबसे पहला चाहिए होता है रोटी, कपड़ा और मकान। वो उसकी बेसिक नीड होती है, राइट? एंड उसका जो नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड है, वो है मेरी फैमिली। नाउ जब आप इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करेंगे ना दोस्त, एक हो गया आपका फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड में क्या हो गया कि भाई साहब आपको खाने-पीने के लिए चाहिए, दूसरा आपको रहने के लिए चाहिए, राइट? सो दिस हैज़ बिकम योर फिजियोलॉजिकल नीड। क्लोथिंग, ये आपका फिजियोलॉजिकल नीड में आया। अब जो दूसरा स्टेट है, वो है आपका मेंटल नीड व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ साइकोलॉजिकल नीड। ना ये साइकोलॉजिकल नीड में होता क्या है दोस्त, ये जो साइकोलॉजिकल नीड है, यहाँ पर आपका थॉट प्रोसेस आता है। नहीं, अब द क्वेश्चन अराइजेस इज़ व्हेन a child is growing to become an adult, and from the adult stage he or she is going to become a parent, and from the parent stage he is going to become a grandparent, which is the old stage. Now during this entire process, one thing is definitely going to be with him which is called as a physiological, which will keep on changing based upon his growth. But in turn when it comes in terms of the psychological need, होता यह है दोस्त कि वो एक्सपेक्ट करता है लव, केयर, affection, ego, attitude. So these are the components which gets added into him based upon his age getting older. Now keeping this in consideration, बहुत ज्यादा जरूरी होता है संस्कार कैसे हैं. You know, it is the most important thing that how does the upbringing happens, and that's the reason why parenting plays a major role, because here a child will learn how do I adjust myself at different levels. आप सभी को मालूम है that whenever a person gets married, it's adjustment. When a person falls into relationship, it's adjustment. When a person gets into a newer organization, it is adjustment. When a person works with a team, it is adjustment. Now the point is, ये जो सारे adjustments कर रहा है या फिर कर रही है किन चीजों के लिए? Because of a very simple fact. क्या? रिश्ते की जरूरत. सिंपल. अगर जहां पर इंसान को ये लगने लग गया कि नहीं मालिक मेरे को इस रिश्ते की अब कोई जरूरत नहीं है, वो क्या एडजस्ट करे? नाउ द पॉइंट इज दैट दोस्त दैट अपने 5 उंगली बराबर नहीं होते, लेकिन होता क्या है, ये एडजस्टमेंट की वजह से इसको प्रॉपर्ली डिजाइन किया हुआ है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, सो इट इट ऑल डिपेंड्स हाउ डू यू एडजस्ट. एंड एज आई हैव मेंशन्ड फ्रॉम द बिगिनिंग कि अपने संस्कार कैसे हैं दोस्त, कि अपन चीजों को लेके आगे बढ़ते हैं या फिर आगे नहीं बढ़ पाते, दैट्स इट. यू नो, हमें अपनी स्किल के लिए ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हायर किया जाता है. आई रिपीट माय स्टेटमेंट, वी आर बीइंग हायर्ड फॉर आवर स्किल्स. सो व्हाट एवर स्किल you have, your technical skill, but a person gets fired from the organization because of his or her behavior. इसका मतलब क्या है कि हमें अपने स्किल के लिए कंपनी में हायर किया जाता है, लेकिन हमें अपने व्यवहार के लिए कंपनी से फायर किया भी जाता है. सो यहाँ पर ये मानना बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में किन व्यक्तियों की व्यक्तित्व को आदर्श मान के चले हैं. So that is where it is, no? कि leadership is always a top-down approach. It's never a bottom-up approach. The organization will behave based upon the board of directors. There is no doubt about it. Because why? क्यों? क्योंकि वो thought process ingrain होता है, वो culture ingrain होता है. तो दिस इज व्हाट इट इज रिक्वायर्ड कि एक बच्चे के संस्कार के हिसाब से वो अपना ग्रोथ डिसाइड करता है, अपने रिश्तों की अहमियत को समझता है. सो नाउ लेट मी शो यू अ वीडियो. एक छोटा सा वीडियो मैं प्ले करना चाहूँ. Well mannered, sir. क्या बोल रहे हैं? Well mannered. वेल मैनर्ड, वेरी गुड. जब मैं ये कह रहा हूँ कि रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए क्या होता है, यू नो, नो मैटर व्हाट. ये जो वीडियो आपने देखा उसमें ये कह रहा है कि नहीं, ये एक प्लेयर कहती है कि साहब मेरा स्किल बहुत ज्यादा है, राइट?
जो कि थोड़ी देर के पहले मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा था, संस्कार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्त। कोई भी परिवार में देखना, वो हालाँकि वो बात अलग है कि ईश्वर ने किसी को बुद्धि की शक्ति ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है। लेकिन रिश्ते की बढ़ोतरी के लिए संस्कार, सिद्धांत जीवन में बड़े आदर्श रखते हैं। जब आप ये तुकाराम जी का है ब्रॉडर विज़न, यस, कि अपने से परे को जब आप देखते हैं, तो आप किस नज़रिए से और किस अंदाज़ से देखते हैं, इससे आपका व्यक्तित्व झलकता है। तो नाउ जब जब वो ये कहते हैं कि दैट देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीवन, पहला, क्या वैल्यू इनग्रेन कर रहे हैं। आप हो सकते हो किसी के भी कैप्टन, कितने भी हाइली स्किल्ड परफॉर्मर आप हो सकते हो, लेकिन एक समय की सीमा है, जिसमें हम सभी को आना है और हमको वो प्रोटोकॉल फॉलो करना है, राइट? दैट इज़, अगर अगर वो ये कहते हैं कि नहीं यार बंदा स्किल्ड है, बंदा ज़्यादा टैलेंटेड है, वो चलेगा यार, वो 9 बजे के बदले 10 बजे भी आए। ये क्या होता है, एक टीम के अंदर आप रिलेशनशिप स्पॉइल कर रहे हैं, राइट? जो कहते हैं ना सबका बराबर का हिस्सा, राइट? This is called as to maintain a good relationship among people. In a similar manner, you have to understand that there is a discipline, there is a timeline, there has to be unity, there has to be coordination, there has to be respect to each other. Only then the relationship will flourish. And the most important thing, I should understand you and you should understand me. And when will that happen? When I will try to adjust with your weakness and you will try to adjust with my weakness. There is absolutely no doubt that every individual has got some strength and some weakness. Point to be noted, is he serious about life or not? That's it. मैं फिर कह रहा हूं, खामियां हम सबके अंदर है, इसमें किसी प्रकार का शक नहीं है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या मैं अपनी खामियों के ऊपर काम कर रहा हूं या फिर मैं उसे नजरअंदाज कर रहा हूं। अगर मैं अपनी खामियों को नजरअंदाज कर रहा हूं, तो सर इस बात पे गौर फरमाइएगा कि मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, एंड उल्टा मेरे साथ जो रहेगा वो भी डिमोटिवेट हो जाएगा। देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट। लेकिन हाँ, मैं अपनी खामियों को समझता हूँ, लेकिन उस चीजों पे मैं काम भी करता हूँ। दैट इज व्हाट विच शोकेसेस कि नहीं, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि हाँ, हर मनुष्य के अंदर कुछ ना कुछ खामियां होती है, लेकिन वो सीख रहा है, वो उसको ओवरकम कर सकता है। क्यों? क्योंकि इक्वल कंट्रीब्यूशन, राइट? And that is when the relationship will grow, the relationship will flourish. And when you expect everything to be done by one person, my dear friends, let us accept and admit, nahi chalega, simply nahi chalega. Okay, I'll read to the next slide, which says social exchange. Individual engage in relations that are rewarding in both tangible and intangible ways, right? थोड़ी देर के पहले हम यही डिस्कस कर रहे हैं, right? This theory is based on the idea that relationships develop a result of cost benefit analysis. Individuals seek out rewards in interaction with others and are willing to pay a cost for said rewards. Very interesting fact that reward plays a major role in terms of building a relationship. Now, for the matter of fact, दोस्त हम सब लोग organizations में काम करते हैं. So what are we looking for? We are definitely looking for the cost benefit analysis, right? साल के अंत में क्या देखा जाता है? साल के अंत में बहुत सारी चीजें देखा जाती है कि मालिक मेरा आरओआई कितना आया, मेरा कॉस्ट बेनिफिट क्या है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट रेशियो कितना है, लंच विद एचओडी या फिर इन एनी ट्रीट, राइट? So what will that happen is that will in turn benefit you in terms of building a good relationship among your colleagues, right? So what is it? एक friendly bonding हो जाता है. It is an extended relationship which you build, that whichever organization you might be moving towards, that will in turn help you to flourish, right? So that is how it is important to build a kind of relationship which will definitely in turn benefit you and the other person.
राइट? एंड रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी एक चीज है जिसमें हम लोग रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन की बात करते हैं, राइट? सो फॉर विच यू गिव द सर्टिफिकेशन एज एन एक्स्ट्रा माइल या फिर गुड जॉब। तो ये सारी क्या है, ये सब रिवॉर्ड रिकॉग्निशन के तरीके हैं। था फ्रेंड्स, लेट अस अंडरस्टैंड यार, there is a line for every There is some relationship. boundary. There is some boundary. Yes, You have to maintain this boundary. Follow how much you spend time. What is the point you want to discuss? yes, very well said, very well said. So just want to throw some light, friends. There has to be a line where should be the crossing कि अपने को इससे ज्यादा it shouldn't be disclosed, right? Because it will backfire over a period of time. So that is most important, to have an understanding till what extent. Okay. So next, I will go to the next slide. Relational self. Now, what is it? Relationships are also important for the ability to help individuals develop a sense of self. In other words, one's emotions and behaviors are shaped by prior relationships. Studies have shown that exposure to someone who resembles a significant other activities, specific self beliefs, changing how one thinks about oneself in the moment, more so than exposure to someone who does not resemble a significant other. दोस्तों, I'll tell you how does it happen is, जीवन में जब आपका अनुभव किसी भी व्यक्ति के साथ होता है, तो आप उस अनुभव को कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। अक्सर ये होता है, जो कि नैसर्गिक है, which is very much natural, right? Now, what you have to learn is, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? इसमें कोई शक नहीं है कि आपका अगर किसी के साथ एक नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है, आप उसी एक्सपीरियंस के साथ कैरी फॉरवर्ड करते हैं। वाई? क्योंकि आपका इमोशंस वहां पर आया है। नाउ इमोशनल पार्ट इज अ वेरी क्रिटिकल एलिमेंट इन ह्यूमन बीइंग, विच जो एक बार इम्पैक्ट हो गया, वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बट यू नो जो कहते हैं ना, लाइफ इज अ जर्नी ऑफ अप्स एंड डाउन। वंस यू कम अक्रॉस अ गुड एक्सपीरियंस, it will definitely help you to forget that experience and give you a better experience. What is important here कि आपको आपके ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। So what I mean by that is, मान लो कि अगर अपने को सेल्फ बिलीफ नहीं है, तो अपन लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। एंड अगर सेल्फ बिलीफ है, तो भले ही आपका इमोशंस कितना भी बिटर एक्सपीरियंस से गो थ्रू क्यों ना किया हो, आप अपने आप को स्टैग्नेंट बना सकते हैं, आप अपने आप को ग्रोथ प्रोजेक्टरी में रख सकते हैं, एंड यू कैन सी योरसेल्फ इंप्रूविंग एंड फ्लरिशिंग। सो ये जो रिलेशनल सेल्फ है, इट इज एवरीथिंग दैट आप आपके ऊपर कितना आत्मविश्वास रखते हैं। अगर ये चीज आपके अंदर है, देन डेफिनेटली आप इमोशनली बैलेंस्ड हो। एंड अगर ये चीज आपके अंदर नहीं है, देन ये जो इमोशनल बैलेंसिंग बिकम्स अ वन ऑफ द डिफिकल्ट जॉब। सो लेट मी आंसर दिस। तो सर, जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, जैसे कि आपने बोला कि इमोशंस को कैसे बैलेंस किया जाए, फर्स्ट द फर्स्ट पॉइंट नीड्स टू बी अंडरस्टूड इज सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस इसका मतलब ये हुआ कि मेरी अपनी जो चीजें हैं, उन चीजों तक मेरा कितना एक्सपेक्टेशन है। एंड इमोशन का सबसे इम्बैलेंस होने का रीजन है एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। दूसरों से जब आप ज्यादा उम्मीदें रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आप ठोकर खाएंगे। देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। नाउ द पॉइंट इज, मैं दूसरों से जो उम्मीद रख रहा हूं, क्या वो जायज है? बट एट दैट पॉइंट इन टाइम, हाउ डू आई मेक माई सेल्फ बैलेंस? क्योंकि इमोशन तुरंत अप होता है, एक्साइटमेंट लेवल, पीपल एनकरेजमेंट। So in this particular connotation, he said one thing very clearly: have realistic expectations from your end, and that will definitely bring a lot of self awareness and self control.
So thousands of people, let us suppose if you and I are there into the stadium in the place of MS Dhoni and we are batting and people are screaming out your and my name, we will not be in a position to perform. Why? Because we did not have that self awareness. Will we able to perform in that particular situation? लेकिन उसी हालात में जो कहते हैं ना साहब एक ही हालात में कुछ लोग अपने आप को तोड़ देते हैं और कुछ हालात को बदल देते हैं। ये क्या था? यू टेक एन एग्जांपल ऑफ द लेटेस्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं सर, जो जो हमारे लेटेस्ट हीरो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ। व्हाट वाज़ दैट? दैट वाज़ बेसिकली एन आर्ट व्हेन यू गेट इंटो दैट स्टेज ऑफ इमोशनल इम्बैलेंस, यू गेट एडिक्टेड। या तो आप ड्रिंक करेंगे या तो यू विल गेट एडिक्टेड टू ड्रग्स। व्हाट इज हैपनिंग इन दैट पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन इज आपका सेल्फ अवेयरनेस नहीं है कि रुकना कहाँ पर है। एक बार आप समझ लिए ना कि दुनिया से अपने को लेन-देन नहीं है, दैट इज़ वेयर द पॉइंट वेयर यू हैव लर्न्ड द आर्ट ऑफ हैंडलिंग इट। सो इन दिस पर्टिकुलर कोनोटेशन सर जो मैं ये कह रहा हूँ ना आपसे कि नहीं एक्सपेक्टेशंस कि मेरे को इतना नो नीड टू डिमांड, जस्ट प्रूव योरसेल्फ एंड मूव आउट। And when you got that quality of handling it, that's the ability of leadership. But the ability of handling emotions, I'm to learn where to stop. So don't have unrealistic expectations. And second point, self-awareness. The video was very clear saying we need to have solid communication, clear, articulate, listen actively, ask questions, appreciate diversity. That itself like completes how the communication should be. Right. Okay, so यार मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा सी हमेशा you have to understand when you're working in a team, you need to one जैसा कि आपने बोला clear communication. All right? An observer, I did not see whose quality is what. एक मूवी बनी है इस पे शानदार तारी जमीन पर। Why? Because as a parent or as a leader or as a teammate, as a colleague, you did not observe me clearly. So first comes observation, right? And आपने अगर if you can recall the story जब आमिर खान उनके parents को बुलाते हैं and एक conversation होता है that why what did you observe being your child, being from your family. Second thing comes is communication. Are you communicating accordingly to what, or are you just communicating by comparing? There are two things, friends. Communication is a very critical element. So if you are communicating to develop somebody, that's called as positive communication. But if you are communicating as a taunt to somebody, you are indirectly trying to demotivate. So when somebody is asking, how is the day? And when you are saying, अबे नहीं यार मेरी लगी पड़ी है. Communication have you shared? You have shared a negative. And then somebody is saying, how is the day? And you're saying, superb, absolutely superb. What are you indirectly doing? You are passing a positive vibration. So please try to understand there is definitely a lot of energy via your communication. अब आप मोदी साहब पे सुनिए, उन्होंने कभी बोला कि बुरे दिन आएंगे? पिछले 10 साल से वो एक ही चीज बोल रहे हैं क्या? अच्छे दिन. Now look at the energy vibration. There is definitely no doubt he's a very good communicator. So in this particular consent, you have to understand how do you channelize. And ये आपको ध्यान में रखना होगा दोस्त that when you are working in a team, you have to motivate, right? You have to motivate each other. You have to bring in that positivity when you talk to somebody, all right? Because that's the energy which you are trying to generate. Okay? Okay, so now the point is how do you take up criticism? The thing which you need to understand when you are making a relationship is how do you take up criticism. So friends, I'll tell you that a very you have to be a very good listener. Santosh is again saying, okay, very good. I'll tell you a beautiful story about our previous Indian captain, Mr. Kapil Dev. It was a beautiful story I've studied somewhere that when Kapil Dev holded a world record, he took 9 wickets, and it happened in Ahmedabad. So when it happened in Ahmedabad, the entire world media have gathered in Ahmedabad that Mr. Kapil Dev has broken the world record, took 9 wickets.
And at that point in time, Mr. Kapil had one of the drawback because he was from a Punjabi medium. He did not knew anything about English, and the entire world media was addressing him in English language. So before he went to the press meet, he was being cautioned by his teammates that don't go to the press meet as you have 300 English journalists, which is quite scary. And everyone started criticizing that your drawback is you cannot speak English, you can't even understand English. So it would rather be an insult. लेकिन कपिल देव ने क्या किया, हर चीज का सामना करके उन्होंने बोला कि नहीं यार, I need to learn how to handle criticism because I'm heading as a captain of Indian cricket team. And friends, at that point in time, with all the confidence and courage, he addresses the press meet, and press meet में से 300 अंग्रेजी जर्नलिस्ट ने एक that Mr. Kapil, why can't a population of 100 use one more Kapil Dev? Why can't India have one more Kapil Dev? And जितना अंग्रेजी उनको समझ में आता था, this is what it is important कि I आप know. I have how got do the you, answer. What he said. yes, yes, I know that. He told yeah, कि can you please share? हाँ, उसने उन्होंने बोला कि अब तो केवल मेरी माँ, मेरे फादर तो भाई, दूसरे कपिल तो कहाँ से आएगा? Exactly. So that, ladies and gentlemen, my mother is 60 and my father is dead, there cannot be one more Kapil Dev. So दोस्तों, यहाँ पर ये जरूरी होता है ना कि आप क्रिटिसिज्म कैसे हैंडल करते हैं। तो जीवन में एक चीज हमेशा सीखना दोस्तों, यहाँ पर यू फील रिक्वायर्ड, just do not speak everywhere. Wherever you, this is the place where it is required that I have to add or I have to address, only then I would request you to speak, or else it's better to keep quiet because silence noise, right? Than words. So, as I was trying to make you understand that you have to learn the techniques of how to handle criticism. And अंग्रेजी में एक बहुत खूबसूरत कहावत है दोस्तों, criticism is for the weak and the weak goes to the cooking pot. मैं दोहराता हूँ दोस्तों, criticism is for the weak and the weak goes to the cooking pot. Character is not made in a crisis, it has been exhibited. लोग उसी को क्रिटिसाइज करते हैं जो जिंदगी में उन्नति करता है, और अगर आपके पीठ पीछे लोग आपकी बुराई कर रहे हैं तो सर, इसमें डिप्रेशन होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सही रास्ते पे हो। क्योंकि जिस घर में उजाला हो उसी घर में पत्थर फेंका जाता है, जो अंधेरे में है वो घर तो दिखता ही नहीं है, उसको पत्थर कहाँ से फेंके। तो जीवन में हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, there are many people who will come and try to pull you down, but you have to ensure that you should push yourself up every single day. Life is a journey in terms of making you better, not bitter. Just keep this in mind and do your job with all the honesty and transparency. Be good with others. Be good with others no matter what. And don't expect anything from the outer world. I repeat my statement, be good to others, but don't expect anything from the outer world, because expectation is something which is making you emotionally weak. Just expect everything from yourself, but not from others. All right. By this, I would like to sum up the training session, ladies and gentlemen. And I would like to thank each and everyone for being a wonderful participant out here.